Assalamu alaikum students, welcome to the week 13 post session. This chapter is about, uh, specifically this one is about decision making process. Now what's the concept of decision making process, and overall it's linked with your 9th chapter up to some extent, और उसके बाद leadership का concept हम इसमें cover करेंगे. We can go through from this topic like formalization और mechanistics and organizational structure क्या है, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे. दैट इज मोर लिंक टूवर्ड डिसीजन मेकिंग चैप्टर our session. Now what's the concept of leadership versus management and theories of leadership. That is the basic you can say content, that is the basic what we can say session that we will cover in week 13, जो week 13 के point of view से. बाकी तो आपका decision making process के point of view से है. Generally decision making process को I think so हमने 9th chapter में discuss किया था, what's the basic way of and what's the process is. उसी को further हम इसमें continue करेंगे. Okay, now what's the concept of organizational formalization? Formal organization क्या होती है या formalization क्या होती है जब हम organizational structure की बात करते हैं, तो what it is basically. Right now this is what we have to discuss. Okay, now formalization determines to which extent business process, policies and job descriptions are standardized. That means आपके जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें आपके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, पॉलिसीज बनी होती हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई होती हैं और प्रॉपर प्रोसेस और पॉलिसीज होती हैं. इट मे रेगुलेट द कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर. It will help to regulate the overall communication between the employees and manager, workplace culture, operational procedures and all that. So it will help to regulate the communication between employees and manager as well. Overall आपके employees और manager के दरमियान जो है वो communication को it's very much helpful. एक proper regular और proper formal method के through regulate करने का formalization is one of the best way. What are the advantages and disadvantages regarding formalization? यहाँ पे भी आपको in the form of sentences दिया हुआ है, but I think so हम इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं. What will be the advantages and disadvantages? अगर एक formalization या formalized organizational structure हो तो what will be the advantages and disadvantages? Right now we have to see internal standardization, repeatable work processes, predictable outcome, quality and compliance with norms. Okay, now first one is about internal standardization. Internally आपकी organization के अंदर एक set of standards बने होते हैं और उसको you have to follow. Just like it makes the employees' behavior more predictable when problem work arises. Employee no turn to handbook or procedure guidelines दिए हुए होते हैं. It reduces the ambiguity and what are the not without any disadvantage. Formalization actually lead to reduce the innovativeness and all that. ये आगे disadvantage है. तो इंटरनल स्टैंडर्डाइजेशन होती है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस बने हुए होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है. फिर रिपीटेबल वर्क प्रोसेसेस होते हैं. अगेन एंड अगेन यू कैन गो फॉर द स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोसेस. जो आपका स्पेसिफिक प्रोसेस बना होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं. प्रिडिक्टेबल आउटकम क्वालिटी होती है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ द व्हाट वी कैन से any product that is predictable, non-predictable नहीं होती है. We know what will be the output. जैसे आप काम करेंगे, set of standards बने होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो we know what will be the outcome that we can get. Compliance with norms. Another one is about how you can comply with the norms. What are the norms and values? How you can match or how you can go for it. ओवरऑल उनको कैसे लेके चलते हैं फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर के अंदर. सो दीज आर द एडवांटेजेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मलाइजेशन. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस रिगार्डिंग फॉर्मलाइजेशन? इट रिड्यूस द मोटिवेशन. जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो मोटिवेशन आपकी रिड्यूस होती है, कम होती है. लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन. कंपैरेटिवली आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है. आपकी व्हाट वी कैन से इनोवेटिवनेस कम हो जाती है.
जब आप फॉर्मलाइज्ड मतलब एक सेटअप पैटर्न डिसाइडेड है, इस तरह काम करना है, इस तरह ये चीजें होंगी, इस तरह सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगी, आपकी इनपुट इसमें कम होती है। ओवरऑल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड। लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, इनोवेटिवनेस कम होती है, रिड्यूस द मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट अप टू सम एक्सटेंट, एंड इनफेक्टिव रूल्स होते हैं। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट formalization and non-formalized or informalized organizational structure. So it's associated with the reduced motivation, job satisfaction, and slower pace and all that. Sometimes employees who are listening to the customer problems may need to take the action, but answer may not be satisfied or specified in any procedural guideline or rule book. So while a handful of the airlines such as Southwest do a good job of empowering their employees to handle complaints, in many airlines, lower level employees have limited power to resolve the customer problem. So generally lower level employees, they have the limited power to resolve our customer problem. So generally they have very limited power to resolve the customer problem. जो आपका लोअर लेवल होता है, बिकॉज डेफिनेटली उनके इन हैंड वो पावर नहीं होती है, तो समटाइम्स बिट डिफिकल्ट. So mechanistic and organic organization, that is another thing that we will discuss in this chapter. That is the second topic. Mechanistic organizational definition क्या है और structure क्या होता है और organic structure क्या होता है. What's the positive and negative point of both of the structures? According to Black's Law Dictionary, mechanistic organization is the organization is hierarchical and bureaucratic. Generally hierarchical जो organizational structure होता है, bureaucratic होता है, उसको हम mechanistic कहते हैं. और generally use भी ये ज्यादा होता है. It is characterized by its highly centralized authority. Very important point. Right, it's highly centralized authority, formalized procedure and practices. इसके अंदर आपका formalized procedure और practices होते हैं, specialized functions होते हैं इसके अंदर. So formal setup practices और procedure जो है इसमें you can say implement की जाती हैं या practice की जाती हैं. So formalized rules and regulation procedures, specialized functions होते हैं, just like the previous one. Formalization की तरफ है, ये ज्यादा near to formalization है जो mechanistic है. So mechanistic organization is relatively easier and simple to organize, but rapid change is very challenging, and in contrast to the organizational organic organization. तो इसमें जो आपकी rapid changes होती हैं वो it's very challenging, difficult होती है उसको manage करना as comparative to organic organizational structure. What mechanistic structure include? Believe upper management is better capable of making decision. That means आप top level management को prefer करते हैं. Management instruction must be followed. In any case, communication and control must proceed through hierarchical route. Hierarchical structure को follow करेंगे, chain of command को. More emphasize toward completing a task opposed to achieving the company goal. Your main emphasis is on completing the task and task opposed to achieving the company goal. So just you have to complete the task, that is more important. Employees are more job specialized and placed into a certain department. So job specialization is zyada hoti hai, and then you have to place those individuals into specific department. Mechanistic and organic organization. The second one is about organic organization. What's the definition? According to businessdictionary.com, organic organization is characterized by flatness, that means communication and interaction are horizontal. So overall ये वो vertical में जाता है, ये horizontal होता है. ये difference भी आपको पता होना चाहिए. इसमें low specialization है, उसमें high specialization है. ये knowledge reside करता है whenever and wherever it is most useful, and decentralization है. उसमें centralization है, इसमें decentralization है. Great deal of formal and informal participation in decision making. So generally participative way of decision making होता है, उसमें आपका ज़्यादा concern top level management से होता है. So it include large network of authority, control and communication. Problem solving is encouraged by all employees. Generally problem solving is encouraging by all employees. Employees are more goal oriented than the job oriented.
आपके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर मोर गोल ओरिएंटेड देन द जॉब ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इनकरेज बाय ऑल एम्प्लॉयज. सारे एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी मच you can say encouraging. So employees are more goal oriented than the job oriented. Employees empowerment is encourage. So generally empowerment जो है वो आपकी employees की उसको encourage किया जाता है and it's more goal oriented rather than the job oriented. वो आपका task और job oriented ज्यादा होता है, mechanistic है. इसमें सारे लोगों को encourage किया जाता है for participation. So this one is the difference. Highly specialized है मैकेनिस्टिक्स और रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. क्लियर चेन ऑफ कमांड है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, सेंट्रलाइज्ड है, हाईली फॉर्मलाइज्ड है. राइट, ये आपकी मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. ऑर्गेनिक का अगर बात की जाए, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, क्रॉस हेरारिकल टीम्स होती हैं. राइट, एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है इनका. उसमें आपका नैरो होता है बिकॉज आप इस तरह जाते हैं तो उसमें आपका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है. क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स यू कैन कॉन्टेक्ट विद एनीवन. राइट, कोई स्पेसिफिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है. डिसेंट्रलाइज्ड है और लो फॉर्मलाइजेशन है. क्लियर जी? So this one is about our first session regarding our week 13. Now we will start our second session of the, what we can say, leadership. Basically this chapter is linked with the leadership concept. Decision making का आपके दो concept हमने discuss किए. Formalization के अंदर हमने मैकेनिस्टिक्स और ऑर्गेनिक को डिस्कस किया. यहाँ पे अभी हम लीडरशिप और लीडरशिप की थेरीज और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. So thank you so much for this session. Now we will take the start regarding leadership in the next session. Thank you, class, and join the next session as well. Thank you, students.